The last several years have seen a rapid increase in the use of information and communication technologies in developing countries to enable economic growth and employment, and to increase access to healthcare, education, and social connections. However, increasingly, it is also becoming apparent that the impact of these technologies in the Global South is not gender-neutral. Instead, it amplifies the existing inequities. Most existing technologies are designed for the average user in mind, who is often a white male in the Global North, literate, financially stable, not from a vulnerable or marginalized segment of the population. It is rarely a woman and almost never a woman in the Global South. And so while women constitute approximately 48.5% of the population in Pakistan, few technologies focus on designing from their perspective, focusing on their needs and aspirations and enabling them to leverage digital spaces for growth and helping circumnavigate their constraints. Pakistan ranks 151 out of 153 countries on the Global Gender Gap Index Report 2020, published by the World Economic Forum. In a patriarchal, religious context, women have restricted mobility in public spaces and their access to the internet and social networking sites is monitored and limited. They are constantly negotiating and renegotiating the space they occupy. It is within this context that any technology aiming to include, empower and engage women must be designed. It is becoming apparent that the impact of information technologies in the Global South is not gender-neutral. Physical access is not the only challenge for women when it comes to accessing technologies and the internet in Pakistan. The literacy rate for women is 62 PC as against a male literacy rate of approximately 80 PC, with the rural divide in literacy levels being much higher. And so, access is not just physical access to a device, but also constraints like language, English versus regional languages, for instance, literacy, digital literacy, limited access to Wi-Fi and data packages due to financial as well as socio-cultural constraints. Any technology designed for users in Pakistan needs to account for local norms and ways of being and doing, which is often the hardest constraint to understand and design for. For example, the way digital privacy operates and is understood in our context is very different from the way it operates in the West. Most, if not all, current smartphone technologies work within a Western-centric framework of privacy, with the assumption of one phone per person. The latter can use a phone lock that is physically only theirs to access. However, this is not the mode of phone usage for much of the Global South and in particular for women in the Global South. Women in South Asian countries like Pakistan often have access to mobile phones and to the internet as shared or monitored resources, which means they have access to a male family member's phone for a short time during the day. And so, for example, given that applications like WhatsApp function on a one-SIM, one-user model, women are often forced to share the male family member's WhatsApp number, meaning there is no privacy afforded to them for their conversations. Some of my work exploring low-literate users' privacy perceptions, beliefs, and behavior reveals the deeply gendered ways in which privacy works. We find that often privacy is not established or maintained within an individualistic framework but is understood as a collective concept, i.e., preserving the family's privacy, honor and dignity and upholding social norms. Similarly, when I speak to women about the digital financial products they use, their adoption of mobile wallets or the lack thereof, I find that they are aware of, but unwilling to use, the existing mobile wallet services provided by different operators because they do not see them as useful. For example, one participant, an older woman who runs a small home-based business, was aware of digital financial services for managing money, but had never had enough disposable income to save in the sense of putting it in an account and forgetting about it. Putting money into a digital account did not enable her to pay her vendors or contribute to her ROSCA, Rotating Savings and Credit Association, or simply committee, which was her primary method for saving for her daughter's dowry or paying her child's school fee. She did not see how the mobile wallet could meet her needs. More often than not, thoughtlessly digitizing women's financials without understanding the mechanisms they have created to circumnavigate their constraints and gain control over their own finances strips them of their agency, instead of enabling them further.
Most existing mobile wallet technologies have not been designed with a localized understanding of how women navigate their financial independence and do not leverage the existing complex mechanisms they have established to exert their agency and autonomy, such as hidden savings or rozgas. This nuanced and complex understanding of privacy, of women's financial life cycles, the constraints on their physical mobilities, their access to resources, their literacy levels and the power imbalances existing within their households is not reflected in the technologies available to them. Instead, most technologies we use are a Western import, which we must distort ourselves to use, finding jugads to carve out privacy online, to create gendered ways of using these technologies. The key to empowering women is a contextualized, thoughtful, sensitive design that is rooted in data from our context, that relies on bringing on board our target populations, men and women both, as co-designers in the process of creating technologies and of fostering a homegrown tech industry that looks towards decolonizing technologies for Pakistan. The writer is Assistant Professor, Computer Science and Director, Interactive Media Lab and Gender and Technology Cluster at LUMS. Published in Dawn, April 7, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. गुज़िश्ता कई सालों में तरक्की पजीर ममालिक में इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा देखा गया है ताकि माशी तरक्की और रोज़गार को मुमकिन बनाया जा सके और सेहत की देखभाल, तालीम और समाजी राबतों तक रसाई में इजाफा किया जा सके। ताहम तेजी से ये भी वाज़ेह होता जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में उन टेक्नोलॉजियों का असर सिनफी तौर पर गैर जानिबदार नहीं है। इसके बजाय ये मौजूदा अदम मुसावात को बढ़ाता है। ज़्यादातर मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ को औसत सारिफ को ज़हन में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जो अक्सर ग्लोबल नॉर्थ में एक सफ़ेद फार्म मर्द होता है, खानदा, माली तौर पर मुस्तहकम, आबादी के कमज़ोर या पसमानदा हिस्से से नहीं। यह ग्लोबल साउथ में शाज़ और नादिर ही एक औरत है और तकरीबन कभी भी औरत नहीं है। और इस तरह अगरचे पाकिस्तान में ख़वातीन की आबादी तकरीबन 48.5% है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज़ उनके नुक्ता नज़र से डिज़ाइनिंग पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं, उनकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं और उन्हें तरक्की के लिए डिजिटल जगहों से फ़ायदा उठाने के काबिल बनाती हैं और उनकी रुकावटों को दूर करने में मदद करती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जानिब से जारी करदा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में पाकिस्तान 153 ममालिक में से 151 नंबर पर है। पिदरशाही, मजहबी तनाजुर में ख़वातीन ने अवामी मकामात पर नक्लो हरकत को महदूद कर दिया है और इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक उनकी रसाई की निगरानी और महदूद है। वो मुसलसल मुज़ाकरात कर रहे हैं और इस जगह पर दोबारा बातचीत कर रहे हैं जिस पर वो काबिज हैं। इस तनाजुर में ख़वातीन को शामिल करने, बाइख्तियार बनाने और मशगूल करने के मकसद से किसी भी टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ये वाज़ेह होता जा रहा है कि ग्लोबल साउथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का असर सिनफी तौर पर गैर जानिबदार नहीं है। जब पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तक रसाई की बात आती है तो ख़वातीन के लिए जिस्मानी रसाई वाहिद चैलेंज नहीं है। ख़वातीन की शरह खानदगी 62% है, जबकि मर्दों की शरह खानदगी तकरीबन 80% है, जबकि देही इलाकों में खानदगी की शरह बहुत ज़्यादा है। और इस तरह रसाई सिर्फ एक आले तक जिस्मानी रसाई नहीं है, बल्कि ज़बान, मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी बमुकाबला इलाकाई ज़बानें, मिसाल के तौर पर खानदगी, डिजिटल खानदगी, वाईफाई तक महदूद रसाई और माली और समाजी सकाफती रुकावटों की वजह से डेटा पैकेजेस जैसी रुकावटें भी हैं। पाकिस्तान में सारिफीन के लिए तैयार की जाने वाली किसी भी टेक्नोलॉजी को मकामी उसूलों और होने और करने के तरीकों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत होती है, जिसे समझने और डिज़ाइन करने में अक्सर सबसे मुश्किल रुकावट होती है। मिसाल के तौर पर, जिस तरह डिजिटल प्राइवेसी काम करती है और हमारे सियाक व सबाक में समझी जाती है, वो मगरिब में काम करने के तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। ज़्यादातर, अगर सब नहीं तो, मौजूदा स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ राजदारी के मगरबी मरकज़ी फ्रेमवर्क के अंदर काम करती हैं, जिसमें फ़ी शख्स एक फ़ोन का मफरूज़ा है। मुअख्खर ज़िक्र एक फ़ोन लाख इस्तेमाल कर सकता है, जो जिस्मानी तौर पर सिर्फ उनका है। ताहम
ये ग्लोबल साउथ के ज़्यादातर हिस्सों और ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ में ख़वातीन के लिए फ़ोन के इस्तेमाल का तरीका नहीं। पाकिस्तान जैसे जनूबी एशियाई ममालिक में ख़वातीन को अक्सर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट तक रसाई हासिल होती है, जैसा कि मुश्तरका निगरानी के वसाइल होते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें दिन के दौरान मुख्तसर वक्त के लिए ख़ानदान के मर्द रुकन के फ़ोन तक रसाई हासिल होती है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशंस वन सिम वन यूज़र मॉडल पर काम करती हैं। ख़वातीन को अक्सर ख़ानदान के मर्द रुकन का व्हाट्सएप नंबर शेयर करने पर मजबूर किया जाता है, जिसका मतलब है कि उनकी बातचीत के लिए उन्हें कोई प्राइवेसी फराहम नहीं की जाती। कम ख़ानदा सारिफीन की प्राइवेसी के तसव्वुरात, अकायद और तर्ज अमल की खोज करने वाले मेरे कुछ कामों से राजदारी के काम करने के गहरे सिनफी तरीकों का इंकिशाफ होता है। हम देखते हैं कि अक्सर प्राइवेसी को इनफरादी फ्रेमवर्क के अंदर कायमा बरकरार नहीं रखा जाता है, बल्कि उसे इज्तिमाई तसव्वुर के तौर पर समझा जाता है, यानी ख़ानदान की राजदारी, इज्जत और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरती उसूलों को बरकरार रखना। इसी तरह जब मैं ख़वातीन से इन डिजिटल मालियाती मसनूआत के बारे में बात करती हूँ जो वो इस्तेमाल करती हैं, मोबाइल वॉलेट को अपनाने अर्ज़ की कमी के बारे में, तो मैं देखता हूँ कि वो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स की तरफ से फराहम करदा मौजूदा मोबाइल वॉलेट खिदमात से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वो उन्हें मुफीद नहीं समझते हैं। मिसाल के तौर पर एक शरीक, एक उम्र रसीदा खातून जो घर पर एक छोटा सा कारोबार चलाती है, पैसे के इंतज़ाम के लिए डिजिटल मालियाती खिदमात से वाकिफ़ थी, लेकिन इसके पास कभी भी अकाउंट में डालने और उसके बारे में भूल जाने के मानी में बचत करने के लिए काफ़ी डिस्पोजेबल आमदनी नहीं थी। डिजिटल अकाउंट में रकम डालने से वो अपने दुकानदारों को अदायगी करने अपने ROSC घूमने वाली बचत और क्रेडिट एसोसिएशन आसिफ कमेटी में हिस्सा डालने के काबिल नहीं थी, जो उनकी बेटी के जहेज के लिए बचत करने अपने बच्चे की स्कूल फीस अदा करने का उनका बुनियादी तरीका था। इसने ये नहीं देखा कि मोबाइल वॉलेट इसकी ज़रूरियात को कैसे पूरा कर सकता है। अक्सर औकात ख़वातीन के माली मामलात को बग़ैर सोचे समझे डिजिटाइज करना, उनकी रुकावटों को दूर करने और अपने माली मामलात पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाए गए तरीक़ाकार को समझे बग़ैर उन्हें मज़ीद फ़ाल बनाने के बजाय उनकी एजेंसी से महरूम कर देता है। ज़्यादातर मौजूदा मोबाइल वॉलेट टेक्नोलॉजीज़ को मकामी तफ़हीम के साथ डिज़ाइन नहीं किया गया है कि किस तरह ख़वातीन अपनी माली खुद मुख्तारी को संभालती हैं और अपनी एजेंसी और खुद मुख्तारी को इस्तेमाल करने के लिए कायम करदा मौजूदा पेचीदा मेकानिज़म से फ़ायदा नहीं उठाती हैं, जैसे पोशीदा बचत ROSC। प्राइवेसी, ख़वातीन के माली लाइफ साइकिल, उनकी जिस्मानी नक़्ल व हरकत पर रुकावटों, वसाइल तक उनकी रसाई, उनकी खानदगी की सतह और उनके घरों के अंदर मौजूद ताकत के अदम तवाज़ुन की ये बारीक और पेचीदा तफ़हीम उनके पास दस्तयाब टेक्नोलॉजियों में ज़ाहिर नहीं होती है। इसके बजाय हम जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं वो एक मगरबी इम्पोर्ट हैं, जिसे इस्तेमाल करने के लिए हमें खुद को मस्ख़ करना होगा, ऑनलाइन प्राइवेसी बनाने के लिए जगह तलाश करना होंगे ताकि इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल के सिनफी तरीक़े तख्लीक किए जा सकें। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की किलीद एक सियाक व सबाक पर मबनी, सोचने वाला, हसास डिज़ाइन है जो हमारे सियाक व सबाक के आदाद व शुमार पर मबनी है, जो टेक्नोलॉजीज़ बनाने के अमल में हमारी हदफ आबादी, मर्द और ख़वातीन दोनों को शरीक डिज़ाइनर्स के तौर पर लाने और एक घरेलू टेक इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने पर मुनहसर है, जो पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म करने की तरफ देखती है। मज़मून निगार लम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस और इंटरैक्टिव मीडिया लैब और जेंडर एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर के डायरेक्टर हैं। अख़ज़ शुदा बतारीख़ 7 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.